ओके हेलो एवरीवन। सो हम लोग ने एरे वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, एरे एंड स्ट्रक्चर्स। ओके, सो वी आर now too familiar about the concept of array in C, how we can declare, initialized, access the elements if, present in array. And array plays the most important role in a programming language like C++, कौन सी भी language में array बहुत ही important है because you don't need to you don't need to access the each and element and write the million lines of code to access the million elements. Okay, so if we declare one array, so you can access those elements at a time using the for loop or the data structure of this array is kind of helpful to access the n number of items through short line of code. Okay, so the array हम लोग को क्या है पता चल गया, and array is nothing about the data structure which used to store the elements which have same data type. Okay, so same data type ये arrow का drawback है because if we want to declare the name of student, the roll number of student, the percentage of student, as well as और कौन सा डेटा टाइप रहता है, देखो नेम में क्या है कैरेक्टर है, रोल नंबर में इंटीजर डेटा टाइप, परसेंटेज में फ्लोट डेटा टाइप. ओके, सो with using array you cannot do this thing to display the information of any student. Okay, so to do that the C provides the new function, the new features, the new functionality, which is nothing about structure in C. So in the structure you can store the multiple types of elements in the same data structure, unlike array में क्या है, जैसे कि array के definition मैंने बहुत टाइम बोला था कि array is the data structure storing element in which you can store the data elements which have same data type. ठीक है, so now अपना टॉपिक कौन सा है, सी स्ट्रक्चर्स. सो यहाँ पे देखो उन्होंने बोला है array is allowed to define type of variables that can hold several data items on the same kind of elements. Okay, same kind. Similarly, structure is another user defined data type available in C that allows to combine data items of different kinds. So there is only one major difference between array and structure. Array stores the elements which have same data type and structure stores the element which have different kinds. Okay, different data types. So structures are used to represent a record. Suppose you want to keep of your books in library. ठीक है, आप लोग को लाइब्रेरी में रजिस्ट्रेशन करना है, अभी आप लोग ने तो किया नहीं है कोविड की वजह से, बट जब अपना फिजिकल कॉलेज चालू था तो यू हैव टू रजिस्टर ऑन लाइब्रेरी. ओके, सो यू माइट वांट टू ट्रैक द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स अबाउट ईच बुक, जैसे कि वो बुक का टाइटल क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ बुक इज प्रोग्रामिंग इन सी, हाँ उसका ऑथर कौन है, फिर बाजार ने स्ट्रोस बुक, सब्जेक्ट क्या है, बुक आईडी कौन सी है, those all attribute is covered in our uh, book data structure. So in the array you cannot do such kind of things, so that drawback is uncovered in this structure kind of element in your C language. ठीक है, so basically structure will helpful you to store the different elements which have different data types in a same data structure manner. Clear? Okay, so see here, in the other language, if in the basic language, we can define a structure as in C programming, a struct or structure is a collection of variables. Okay, now why do we use struct? Because to define structure in C program, we use this keyword struct. Huh? Like array, we use the keyword ARRAY, array as it is. But to declare the structure, we use this keyword struct for the declaration of structure in your C programming. Okay, so it is a collection of variables, can be of different types. Okay, it is a collection of variables, elements which have different data types under a single name, under the same data structure. Okay, so how to define structures? So before you can create structure variables, you need to define its data type. Obviously in the array elements we do the same things. We did the same things, like we first define the data type integer, then array name, and then size of the array. So to define a structure, the struct keyword is used. ठीक है, this is the important line, note down कर लो चाहिए तो. To define the
structure in your C language, you declare you use struct keyword. ठीक है, so the syntax of structure is array का क्या था, array then sorry data type, array name and size of the array. ठीक है, so similarly here struct keyword and then structure name, that's it. And inside this structure name we create one body using parenthesis, using this open curly braces and close curly braces thing, and to end the structure with compulsory semicolon. Means uh, we use these open curly braces and close curly braces for many kind of things in C. If के लिए हमने यूज किया, then for के लिए यूज किया, but all this scenario we cannot full stop या फिर we cannot put the semicolon before the closing of this parenthesis. But in case of structure we write here semicolon after the closing of structure scenario. ठीक है, so I hope you get the idea of how the user can declare one structure and inside the body he or she can pass the elements whichever he wants. So the element declaration scenario is same, like you have to write first data type and then member name. So ऐसे आप लोग in number of elements या फिर variables pass on कर सकते हैं. Just you have to write the data name of that individual element and the name of this member 1, member 2 up to member n. And also one point is important, like you have to end those declaration part with semicolon as well. मतलब int roll number, sorry character roll number, then int character name, int roll number, float percentage and so on. ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हम लोग ने, struct person. I'm creating one structure named as person using struct keyword, and inside the body I'm passing 3 attributes, like first is name, and I'm passing this name as a array. So the size of name array is 50. ठीक है, so up to 50 we can pass the character value. जैसे कि आपका नेम रहेगा, सो वो पर्सन का नेम वो यहाँ पे पास कर सकता है. देन द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज या फिर नेक्स्ट वेरिएबल इज CIT नंबर. सो उसका जो CIT नंबर रहेगा इंडिविजुअल, वो उसके लिए नंबर, अभी नंबर के लिए हम लोग कौन सा डाटा यूज करते हैं, ऑब्वियसली इंटीजर. सो इंट CIT नंबर एंड फ्लोट सैलरी. सो आई एम पासिंग दिस नेम, सीट नंबर एंड सैलरी ऑफ द इंडिविजुअल पर्सन यूजिंग स्ट्रक्चर. ओके, now create a struct variables. ठीक है, this is not the variable, this is the member. Okay, I misspelled the word as these are the variable. This is not the variable. Variable means you create one structure, and along with that structure you create the respective variables of that structure. जैसे कि person है तो person P1, person P2. Okay, ये जो हुआ ना, ये अपना variables है. Those are the attributes, those are the members of this structure. So do not get confused between members and variables in C structure. Okay, so when a struct type is declared, no storage or memory is allocated. So whenever you created these things, there is no storage allocation in the background. Okay, to allocate memory, if you want to allocate the memory to these individual member names of a given structure, type and work with it, we need to create a variable. So we have to create variables for to do this, to do the memory allocation part. Okay, and variable is nothing about, हम लोग ने वो पढ़ा, variable is nothing about जिसकी वैल्यू चेंज होगी at the time of execution. Those who are vary in flow of execution are the variables. Constant की वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते, but we can able to change the value of variables. Okay, so here we create one person structure and passing the same attribute as name, CIT number and salary, and inside the main method we are creating the variables for this person structure. See here, यहाँ पे मैंने कॉल किया है struct person, person 1, person 2 and P of 20. ऐसे हम लोग, मतलब ये उन लोग ने बोला कि we can create the n number of variables for this individual structure. Clear? Okay, ये this is the first way of creating variables in C structure, and there is another way of creating a structure variable. Like आप लोग ने यहाँ तक डिक्लेअर कर दिया, याच्यानंतर
you simply write the variable name as person1, person2 up to p23. Either you can create the variable inside the main function, or you can simply write the variables after the declaration of structure body, but you have to compulsory write the semicolon after declaration of structure body. ठीक है? So I hope you get the idea how you can create structure in your C programming. Okay, then the next is access member of structure. So there are two types of operators used for accessing member of structure. So these two data types, these two uh, operators are going to be used while accessing members in structure. So फर्स्ट कौन सा है? मेंबर ऑपरेटर. जो डॉट हम लोग लिखते हैं ना, डॉट यूज करतो आपण मेंबर ऑपरेटर साठी. ठीक है. एंड द सेकंड इज स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर. सो जो ये एरो दिख रहा है, डैश एंड लेस देन ऑपरेटर इज यूज टू एक्सेस द मेंबर इन स्ट्रक्चर, विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. ठीक है. सो ये दो ऑपरेटर से हम लोग वो एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. सपोज यू वांट टू एक्सेस द सैलरी, यहाँ पे देखो, सपोज यू वांट टू एक्सेस द सैलरी ऑफ पर्सन1 या फिर पर्सन2 की सैलरी एक्सेस करनी है. सो आप लोग कैसे लिखोगे? सपोज पर्सन2 की सैलरी एक्सेस करनी है, सो यू राइट द वेरिएबल नेम पर्सन2 डॉट सैलरी. हाँ, सो व्हेनेवर यू राइट दिस थिंग, द कंसोल या फिर जो आपका टर्मिनल है वो आउटपुट में क्या देगा? उसकी सैलरी. सपोज उसने आपने एंटर किए 15K, so the 15K will be my output. Clear with this? Okay. See here the example of structure in C programming language. So problem statement क्या है? You have to add two distances. दो distance आपको add करना है using this C program. Okay. See here. First यहाँ पे comment दिया हम लोग ने, program to add two distance feet and inch. ये दो में आपको distance add करने in this program. Okay. So initially we write the header file जैसे हम लोग सारे प्रोग्राम में करते हैं. एंड अभी देखो ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है. जैसे अनलाइक आवर रेगुलर प्रोग्राम्स, वी in the scenario of structure we cannot start the structure declaration inside the main method. ठीक है. You have to write the structure declaration outside the main method, and it is preferable to write the structure declaration after the header file declaration and before the main method declaration. ठीक है. या दोघांच्या मध्ये आपण जर केलं स्ट्रक्चरचं डिक्लेरेशन, सो इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू राइट द स्ट्रक्चर इन बिटवीन देम. सो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है, एंड इनसाइड दिस स्ट्रक्चर्स आई एम पासिंग टू मेंबर्स as feet and inch, and the data type of feet is integer and data type of inch is float. ठीक है. So you can pass the integer value to feet, and you also pass the inch value in float. ठीक है. And after that I am creating three variables, dist1, dist2 and sum. इतना समझा? सो सिंपल है, कुछ नहीं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है डिस्टेंस का, जहाँ पे हम लोग फीट और इंच डिक्लेयर करके दो डिस्टेंस के लिए हम लोग वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके फीट और इंच कितनी है. ठीक है. नाउ सी हियर द एक्चुअल प्रोग्राम पार्ट. आई एम डिक्लेयरिंग नाउ मेन मेथड, विच इज द एंट्री पॉइंट ऑफ ईच एंड एवरी सी प्रोग्राम. इनसाइड द मेन मेथड I'm printing one statement, first distance or /n. ठीक है. So first distance, this printf line is going to be as it is displayed in your output console. यहाँ पे देखो first distance as it is print हो रहा है, there is no logic. Then the next is printf enter feet. यहाँ पे मैंने कुछ %d वैसा कुछ लिखा नहीं है. So this line is also going to be print on our output console as it is. So यहाँ पे देखो enter feet as it is print हो रहा है. So अभी मुझे ऐसा करना है प्रोग्राम कि enter feet के exactly सामने user can able to pass the input value. ठीक है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? scanf. Obviously printf अगर मैंने कुछ दिखाया तो if I want to get the input value, so we simply pass the scanf statement. So scanf में मैंने क्या लिखा? इसका डेटा टाइप है integer. That's why I am writing the %d. और यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि हम लोग एक्सेस